Hello, my dear students. Welcome to the Slate class of Physics AS. In this class, we will start with a new chapter, and the chapter is Force, Density, and Pressure. Right? With the force, density, and pressure से related, जो हमने topics discuss करने हैं, mainly those are density, pressure exerted by fluids, and pressure exerted by solids, and most importantly, the new one, upthrust and movement of forces and torque. Right? So पहला जो portion हम cover करेंगे, that will be related to movement of forces. Right? So the first thing that we have to discuss is center of gravity. We have already discussed this in O levels. Center of gravity is also referred as center of mass. Right? So what is center of gravity? Center of gravity is a point at which whole weight of body appears to act. Right? आप बुक को अपनी फिंगर पे बैलेंस कर लेते हैं और जिस पॉइंट से आप उसको फिंगर पे बैलेंस करेंगे दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. राइट? सो यू विल राइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट at which the whole weight of an object appears to act. Right? और जनरली जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, जितनी भी यूनिफॉर्म शेप होती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज right at the middle, right at their geometric center. For example, you can see a picture of meter rule. What is the length of meter rule? Meter rule is definitely 1 meter or 100 centimeter. So at which point its center of gravity lies? Its center of gravity lies right in the middle. That is 50 centimeter from either side. Right? So इस 50 centimeter mark पे इसका center of gravity lie करेगा. राइट? तो आप इसको 50 सेंटीमीटर मार्क से अपनी फिंगर पे या किसी पिवट पे बैलेंस कर सकते हैं. ठीक है? इसका मतलब ये है कि फर्दर इस चैप्टर में जब हमने मोमेंट्स कंसिडर करने हैं तो हम सारे के सारे डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंसिडर करेंगे बिकॉज द फोर्स और द वेट एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. राइट? एंड देन यू हैव दिस स्फीयर, दिस बॉल शेप. Once again, the center of gravity is right in the middle. I am labeling it with point C. ठीक है? This midpoint of the sphere is the center of gravity. वो वाला point जिससे surface तक का distance radius होता है. And next is a practical example of center of gravity. आपने ये वाला toy बचपन में जरूर देखा होगा कि आप अपनी finger tip के ऊपर इस bird को balance कर सकते हैं. ठीक है? So my question is why this bird is not balanced, is not falling. This is because its center of gravity lies right at this point जो कि इसकी बीक बन रही है जहां से आपने इसको बैलेंस किया. ठीक है? इसके विंग्स थोड़ा सा आगे हैं और इसका वेट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है that center of gravity is lying right at this point. Right? So object can be balanced right from its center of gravity because whole weight of an object appears to act right at that point. And weight acts vertically downwards. For example, इस point पर weight कहाँ पर act कर रहा होगा? इस point पर weight act कर रहा होगा vertically downwards in this direction, like this. Keep in mind that weight is a vector quantity and it always act right towards the center of earth. इसकी direction हमेशा vertically downwards हो. Right? Now, the main thing that we have to study in this chapter is turning effect of forces. अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन. ठीक है? व्हाट आर द टर्निंग पॉइंट्स? मतलब जो भी चीज पिवट पे फिक्स्ड होती है और आप उसको टर्न कर सकें दैट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल इस माइक को मैं अबाउट दिस पिवट जो है ये टर्न कर सकता हूँ लाइक दिस. ठीक है? दिस इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. उसके अलावा यू सी हिंजेस इन डोर्स, इन किचन कैबिनेट्स और अ लॉट ऑफ प्लेसेस. राइट? सो व्हाट इज पिवट? Pivot is that fixed point about which an object turns. Right? For example, हमारे joints. ठीक है? ये joint भी pivot है, ये joint भी pivot है, आपके elbow पे भी joint है, वो भी pivot है. ठीक है? So these are basically natural pivots. And then you have this spanner which is used to open a nut. Yeah, tight a nut. So pivot is formed right at the center of this point about which the turning effect is taking place.
right? And then you have this diagram of hydraulic jack. Hydraulic jack is used to lift cars, right? So about this point, it will turn, so this is the pivot. Keep in mind that pivot is also called fulcrum or hinge, right? Now, moment of force. What is moment of force? It's a physical quantity. You have discussed this quantity in O levels. Moment of force is product of force and perpendicular distance between force and pivot. So, हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, but before that we will write the definition. So you will write that moment of force is product of force and perpendicular distance between line of action of force and pivot. राइट अब इस डेफिनेशन को आप जब देख रहे हैं तो शायद इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी. मे बी यू डोंट नो व्हाट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा. अब ये याद रखें कि फॉर एग्जांपल दिस पेन इज पिवटेड एट दिस पॉइंट. ठीक है, जब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं तो अपने वेट की वजह से टर्न करेगा. ये देखिए, it is turning and it is going downwards due to its weight, right? So in this particular example, this is hinge. Its weight or force is acting right at its center of gravity in downward direction, and the distance between this force and this pivot, this is a perpendicular distance, right? So considering this example, let's assume that this is pivot, right? And this is door. Or you can say this is distance. And force is acting at this point. Right? This is a pivot. So about this pivot, about this point, in which direction force is acting? Vertically downwards, and distance is horizontal. What is the distance? What is the angle between this force and this distance? This angle is 90 degrees, right? So moment is product of force and perpendicular distance between line of action of force and pivot, right? You have to memorize this formula. ये वाला formula, O levels वाला formula, there is nothing new. Now what is line of action of force? but जो line of action of force, अगर आप force की line को दोनों sides पर extend कर देते हैं, this is a line along which force is acting. This line is referred as line of action of force, right? So what is line of action of force? Along which the force acts. ये force की line है ना, अगर आप इसको दोनों sides पर extend कर देंगे, this is line of action of force. और याद रखिएगा, pivot से line of action of force का perpendicular distance हमेशा shortest distance होता है. पिवट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, राइट? व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज न्यूटन मीटर. SI unit is Newton meter, and the direction of movement is either clockwise or anti-clockwise. For example, in this case, force is acting downwards. तो अबाउट द पिवट आप देखिएगा कि एरो किस साइड पर मूव करेगा. जब इस एरो पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी, इट विल टर्न इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, दिस इज टर्निंग इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज आइदर क्लॉकवाइज or anti-clockwise. Clockwise or anti-clockwise. Moving on, we will see some practical cases in which movement is produced. So here you have a top view of a door, right? The length of this door is 1 meter
and force of 10 Newton is acting right at this point, at the edge of door. Force is acting at this point and the magnitude of this force is 10 Newtons. Magnitude of this force is 10 Newtons. Now, what is line of action of force? Line of action of force is a line along which the force acts. तो अगर मैं इस लाइन को दोनों साइड्स पर एक्सटेंड कर देता हूं, दिस लाइन इज रेफर्ड एज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ force. Line of action of force. Now, what is the angle between this force, this 10 Newton force, and this distance? Angle here is 90 degrees. Angle here is 90 degrees. Right? So, मैंने ये case 1 लिखा है जिसमें force and distance are by default perpendicular to each other. So, let's find out the value of moment in this case. So, what is the formula of moment? Moment is product of force and distance. Right? Formula जरूर लिखा करें. Force is 10 newtons and distance is 1 meter. So moment is 10 Newton meter. And what is the direction? It is turning in which direction? Clockwise direction. So sometimes he asks you to determine the direction also. तो आप इसको direction भी साथ बताएं. Right? Now, here are some different cases you have to understand them very carefully. This is case 2, and in case 2, the force is acting in a way that it is parallel to the direction of distance, right? Force is acting in this direction. So when the force is acting like this, and its magnitude is same, which is 10 newtons, moment will be 0. अगर आप डोर को फ्रंट साइड से फोर्स लगाती हैं along the direction of door, तो डोर टर्न नहीं होता, राइट? सो इस पर्टिकुलर केस में एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड फोर्स इज 0 degrees, राइट? अच्छा, you have to consider shortest distance, you have to consider shortest or perpendicular distance between line of action of force and pivot. तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को तो जरा कंप्लीट कीजिए. मैं इसी फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करूंगा and you will see that this line is passing from the pivot at this point. ठीक है? Line of action of force कहां से पास हो रही है? Pivot से पास हो रही है. For example, मैं आपको easy करके बताता हूं. This is a line and this is a point. ठीक है? इस black line और इस purple point में what is the shortest distance? आप कहेंगे shortest distance is 0. Why the shortest distance is 0? Because point is lying on the line. Similarly here, pivot is lying along the line of action of force. ठीक है? तो आप moment का formula लिखेंगे. Moment is product of force and distance. Force here is 10 newtons and distance is 0 because the shortest distance between line of action of force and pivot is 0. So right away, moment will be 0. ठीक है? So you must remember that whenever line of action of force passes through the pivot, जी ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में हो रहा है, that line of action of force is passing right through the pivot. In such case, moment, the turning factor of force is always 0. ठीक है? So case 1 में angle was 90, moment was maximum. ठीक है? इस केस में force and distance are parallel, line of action of force is passing through pivot, and in this case, moment is 0. ठीक है? Now move on to the next case in which angle is not 0 and not 90. So what is angle? In this particular case, the force is acting in such a way that it is at an angle with the point of action of force. This is the direction of force. Right? As this force is 10 newtons, it is acting in such a way that it is making an angle of 30 degrees with the vertical. Here you have the vertical line, this dotted line. ठीक है? So force is at an angle of 30 degrees with vertical. This angle is 30 degrees. Right? So how I will find moment? Moment के लिए force और distance में angle 90 degree होना चाहिए.
Here the angle is not 90. So in this case, you have to resolve the force. You have to find two components of forces, horizontal component and the vertical component of force, right? So resolving this force of 10 newtons, here you have its horizontal component and here you have a vertical component. Now what is the component of force which is opposite to the given angle? This one. This component is always sine component of force. So I will write it as 10 sine 30. Okay? And this component is adjacent component. This is 10 cos 30. Now, which component of force is responsible for the turning effect? Which component of force will produce moment? The one which is perpendicular to distance. The one which is making an angle of 90 degree with the distance, right? And that component is 10 cos 30. That component is 10 cos 30. So you will use this 10 cos 30 component to find out the value of moment. So you will write once again the formula of moment, which is force multiplied by distance. Now, we decided that the component of force that will produce moment is 10 cos 30. So 10 cos 30 multiplied by distance, which is 1 meter. Okay? So 10 cos 30 multiplied by 1 is 8.66. 8.66 न्यूटन मीटर्स, राइट? अब इस एरो की डायरेक्शन से डिसाइड करें कि मोमेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है. जब आप फोर्स अप्लाई करें इस डायरेक्शन में, दिस एरो इज टर्निंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज clockwise direction, right? So moment of 8.66 Newton is produced in clockwise direction, right? अच्छा, इसी चीज को डील करने का एक और तरीका भी है, और वो तरीका इस वजह से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन सम क्वेश्चन दैट मैथड इज कंपैरेटिवली easier. If we stick with the definition of moment of force is that moment is product of force and perpendicular distance between line of action of force and pivot. ठीक है, उसने कहीं पर ये नहीं कहा it is product of component of force. हाँ, हमने इस केस में component of force find out किया और हमारा ठीक आंसर आया, हमारा काम चल गया, लेकिन it's not always the component of force. Let's stick with the definition that moment is product of force and perpendicular distance between line of action of force and pivot. और उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. So once again the same force is acting. The magnitude of force is 10 Newton and it is acting at an angle of 30 degrees with respect to the vertical line. So here you have a force of 10 Newtons. ठीक है, let's resolve this force once again. This is vertical component of force. And this is horizontal component of force. And this angle is 30 degrees. But this time, I am not resolving this force. ठीक है, मैं इसका horizontal component और इसका vertical component find नहीं कर रहा. I want to stick with the definition of force, of moment, which is product of force and perpendicular distance between force and line of action of force. ठीक है, तो मैंने force को resolve नहीं करना. मैंने force को resolve किए बगैर turning effect of force find out करना है. For that, I will extend this line of force and you call this line of action of force. तो ये green color से जो मैं dotted line draw कर रहा हूँ, this line is line of action of force. So here you have this line, the line of action of force, and here you have a point, and this point is the pivot. So figure out the shortest distance or perpendicular distance between line of action of force and pivot. ठीक है, so you know that shortest distance between point and a line is always perpendicular distance. So जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको figure out करने लगा हूँ. I am talking about this distance. pivot से line draw की, ठीक है, और ये इस point को इस तरह से meet कर रही है such that this angle is 90 degrees. Now, this distance B is the perpendicular distance between line of action of force and pivot. ठीक है, so आपने moment find out करना है using this distance, right?
अच्छा, नाउ व्हाट विल बी द एंगल? जरा एंगल्स को देख लीजिए. मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व कर रहा हूं, तो दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. सो दिस एंगल मस्ट बी 60 degrees and this angle must be 30 degrees. So if you consider this triangle A, B and C, you will get to know that this triangle is right angle triangle because one of its angle is 90 degrees and you have all other angles. You have length of one of its side and that is hypotenuse which is equal to 1 meter. So let's find out this distance D. You can use either of the angle. You can use this 30 degrees. You can use this 60 degrees. तो मैं distance D find out करने के लिए sin apply कर रहा हूँ. Sin theta or sin 60 degrees is equal to opposite which is distance D divided by hypotenuse which is 1 meter. From here, distance is coming out to be 1 sin 60. ठीक है? 1 sin 60 is 0.866. 0.866 meters. Right? Now, let's use this distance and this force without resolving to find out the value of moment. Right? So, moment is product of force and distance. अब आपको fair idea हो चुका होगा. Every time I write the formula. Every time I check the units. तो आपने फॉर्मूला भी लिखना है, यूनिट्स भी लिखनी है और अपने पेपर को चेक भी करना है. ये छोटी छोटी चीजें जहां पर आप मार्क्स लूज करते हैं. राइट? सो फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया, हम फोर्स को एज इट इज लिखेंगे विच इज 10 न्यूटन्स और वी आर कंसिडरिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस लाइन एंड दिस पिवट. ठीक है? This will help us giving the value of moment. ये डिस्टेंस कितना आया बच्चों? 0.866. ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 8.66 न्यूटन मीटर्स once again. राइट? इसका मतलब ये है कि sometimes it is convenient to resolve force. Sometimes it is convenient to find the shortest distance between line of action of force and pivot. तो इस केस में आपको फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट पर आके अगर हम डेफिनेशन को देखें, द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट, अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आने वाली है. मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, नॉट कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट. ठीक है? हमने लास्ट केस में ऐसा ही किया, हमने फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया. ठीक है? हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट फाइंड आउट किया, जिससे भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया. नाउ वी विल ट्राई अ सिंपलर क्वेश्चन रिलेटेड टू मोमेंट. ठीक है? इस क्वेश्चन को देखें. यू हैव एन एल शेप्ड आर्म, अ मेटल आर्म लाइक दिस, which is pivoted at this top point. This is a pivot, right? 4 forces are acting at different points. Force 1, force 2, force 3 and force 4. So these will produce moment. You have to find the resultant moment due to these 4 moments, right? So a moment is produced due to force 1, force 2, force 3 and force 4. Let's find out these moments. So force 1 को अगर आप गौर से देखें, this is the line of action of force 1. Orange कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन. This is line of action of force. ठीक है? What is the shortest distance between this line of action of force and pivot? तो force 1 के लिए जो आप distance consider करेंगे, वो इस line of action of force से pivot तक का shortest distance consider करेंगे. So this distance is this one and its value is 0.5 meters, which is written right below this distance. So force 1, moment is force which is 4 newtons multiplied by distance which is 0.5 meters. This value is 2 Newton meters. ठीक है? और याद रखना बच्चों, इससे जो moment produce हो रहा है that is in anti-clockwise direction. Now consider force 2. Force 2 is acting along this line.
ब्लैक कलर से मैंने एरो शो किया, राइट? नाउ वी विल डू अ सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. Here on your screen you can see an L-shaped arm, right, which is pivoted at top. 4 forces are acting on this arm, force F1, F2, F3 and F4 respectively, and they will produce moment. You have to find out the value of resultant moment due to these 4 forces, right? So the forces we have are force F1, force F2, force F3 and force F4. If we see force F1, ठीक है, F1 की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो लेट्स फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पिवट. So this is line of action of force F1. So what is the shortest distance between this line and pivot? The shortest distance between this line and pivot is 0.5 meters, this distance, right? So moment produced by force F1 is force which is 4 multiplied by distance which is 0.5. This moment is coming out to be 2 Newton meters, right? Now see force F2, ठीक है? Force F2 की जो line of action of force है, that is this line of action of force. Now, what is the shortest distance or a perpendicular distance between line of action of force 2 and pivot? That distance is 1 meter. ठीक है? So force F2 के लिए बच्चों, force is 6 newtons and distance is 1. So Newton meter is 6 Newton meter of moment. For force F3, now this is very important. For force F3, अगर आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करते हैं, दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज एग्जैक्टली पासिंग थ्रू द पिवट. ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है ये पिवट से पास हो रही है. सो फॉर दिस फोर्स मोमेंट कितना होगा? मोमेंट विल बी 0. Now this is very important. Whenever the line of action of force passes through pivot, moment will be 0, right? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. वो कहते हैं F3 के लिए डिस्टेंस जो होगा वो 1 मीटर होगा. ऑब्वियसली लग रहा है कि डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कंसिडर करना है, लेकिन नहीं, ये डिस्टेंस जो है ये फोर्स के साथ पैरेलल है. फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू पिवट, सो इन दिस केस मोमेंट मस्ट बी 0. You have to take care of this thing, right? And finally force F4. The magnitude of force is 10 and the angle between force and distance is 90 degree, and the distance or the shortest distance between line of action of force and pivot is 1 meter, so moment is 10 Newton meter. ठीक है? अच्छा, इस केस में मोमेंट किस साइड पर प्रोड्यूस हो रहा है? इस केस में भी जो मोमेंट है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैं आपको जरा यहाँ से करके दिखाता हूँ कि लेट सपोज ये एरो है, फोर्स F4 की वजह से ये राइट साइड पर जाएगा, तो इट इज प्रोड्यूसिंग मोमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है? सो ऑल द मोमेंट्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप उनको ऐड कर लें. दिस 2 न्यूटन मीटर, 6 न्यूटन मीटर एंड द लास्ट वन इज 10 न्यूटन मीटर्स. जब आप इन सबको ऐड करेंगे योर आंसर विल बी 18 न्यूटन मीटर. सो द रिजल्टेंट मोमेंट इज 18 न्यूटन मीटर and its direction is at the clockwise direction, right? And you can expect such question in MCQs because आपसे expectations बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं. आपको इस तरह questions को MCQ से practice करना है ताकि आप इस तरह question within a minute attempt कर लें. ठीक है? So in the next class we will do some more questions related to turning effect of force, और हम different situations में जाएंगे and you will get to know कि moment के ये particular cases भी हो सकते हैं. So hoping to see you in the next class. Thank you.